नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 14 है दादाजी, उसका प्रथम पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखिका है कुंदनिका कापड़िया, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। લેસન નંબર 14 દાદાજી, જેના લેખિકા છે કુંદનિકા કાપડિયા. તેઓનો જન્મ 11/1/1927માં લીંબડીમાં થયો હતો. મુખ્યત્વે વાર્તા, નવલકથા, નિબંધ અને અનુવાદમાં તેમનું અર્પણ રહ્યું છે. પ્રેમના આંસુ, વધુ ને વધુ સુંદર, કાગળની હોડી, જવા દઈશું તમને વગેરે તેમના જાણીતા વાર્તા સંગ્રહો છે. પરોઢ થતાં પહેલાં અગન પીપાસા અને 7 પગલાં આકાશમાં વગેરે તેમની પ્રખ્યાત નવલકથાઓ છે. તેમણે ભિન્ન ભિન્ન વિષયના કેટલાક સુંદર લેખો પણ આપ્યા છે. કોઈ અનાથ બાળકને પણ જો અતૂટ સ્નેહથી ઉછેરવામાં આવે તો તે સ્વજનથી પણ વિશેષ મમત્વ અને પ્રેમ અર્પે છે. એ રહસ્યને લેખિકાએ આ વાર્તાની અંદર કૌશલપૂર્વક સૂચવ્યું છે. જીદુનાથે 16 વર્ષ પહેલાં અનાથ નવજાત બાળકીને પોતાની પૌત્રી ગણીને પાળી પોસીને તેથી કલ્યાણીને માટે એકલવાયુ જીવન ગુજારતો જીદુનાથ અભિન્ન એવો દાદાજી બની ગયો. લેખિકાએ કલ્યાણી અને જીદુનાથ કેવા એકમેકનો આધાર બની ગયા છે તેનું ભાવવાહી આલેખન કર્યું છે. બંને પાત્રોના ઉદ્ગારોમાં, મનોવ્યાપારોમાં અને વ્યવહારોમાં તેમના ઊંડા સ્નેહનું દર્શન કરાવ્યું છે. વાર્તા લેખિકા અહીં કલ્યાણી 16 વર્ષે પરણીને સાસરે જતાં અડધેથી પાછી દાદાજી પાસે આવે છે એવા વાર્તા વસ્તુના વળાંક માટે પેલા રેંકડીવાળા અને તેની સ્નેહાળ પૌત્રીનો ઉપપ્રસંગ મૂકીને મમતાભર્યા સ્નેહનું મમત્વ સ્થાપે છે. લેખિકાએ કેન્દ્રવર્તી ભાવ પરિસ્થિતિ, પાત્રોની મનઃસ્થિતિઓ અને પ્રસંગમાં આવતા પલટાની औचित्यपूर्वक मावजत करी है. इस लेसन के अंदर लेखिका कुंदनिका कापड़िया ने हमारे सामने दो ऐसे कैरेक्टर को यानी कि चरित्र को हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है, जिसमें एक है कल्याणी जो अनाथ है और दूसरे है जिदुनाथ. कहते कि जिदुनाथ अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले ही वो गुजार रहे थे. उन्हें कहीं से कहते कि नदी किनारे से जब वो घूमने जाते हैं तो वहाँ से उन्हें ये जो कल्याणी है छोटी सी उस समय उन्हें मिली थी. कहते हैं कि उन्होंने आस पड़ोस उनके सगे रिश्तेदारों को सबको उन्होंने पूछा और इस बच्ची को अपनाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें ऊपर से खरी खोटी भी सुनाई. और अंत में जिदुनाथ उस बच्ची को पाल पोस कर उसे बड़ा करते हैं. कहते हैं कि जब वो कल्याणी 16 साल की हो जाती है और शादी लायक हो जाती है, जिदुनाथ उसकी शादी की तैयारी करते हैं तो कल्याणी शादी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो अपने दादाजी को छोड़कर जाना नहीं चाहती है. और जिदुनाथ भी कल्याणी से इतना स्नेह करते हैं, लेकिन फिर भी समाज के रीति रिवाजों के कारण उन्हें कल्याणी की शादी करनी ही पड़ती है. कहते हैं कि कल्याणी की शादी जब कर दी जाती है और कल्याणी जब अपने दादाजी को छोड़कर जाती है तो उस समय कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी कहते हैं कि उसका जो मन है वो अपने दादाजी के अंदर ही उसका मन वहाँ पर लगा हुआ था कि उसके दादाजी क्या करते होंगे और कैसे रहेंगे, उन्हें पानी कौन देगा, उनकी सेवा कौन करेगा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती रहती है. जब वो स्टेशन के बाहर जब देखती है एक बूढ़े चाचा को और उसकी एक पोती को जो ठंड से काँप रहे हैं, तो कल्याणी भी अचानक उसे भी थोड़ा-सा मन में डर लगता है कि उसके दादाजी भी क्या कर रहे होंगे, और तुरंत ही वो अपने गाँव की तरफ आने वाली ट्रेन में वापस बैठ जाती है और कहते हैं कि अपने दादाजी के पास वहाँ पहुँच जाती है. तो इस प्रकार कहते हैं कि 2 ऐसे चरित्र को, कैरेक्टर को हमारे सामने रखा है कि जो
कहते कि एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी ये जो रिश्ता है, जिसे पाल पोस स्नेह का रिश्ता, कि भाई एक अनाथ बच्ची को पाल कर बड़ा किया और ये बच्ची भी उससे भी अपने दादाजी से इतना लगाव हो गया कि उसे छोड़कर जाने के लिए भी वो तैयार नहीं है। तो ऐसी कहानी हमारे सामने रखने का प्रयत्न लेखिका ने किया है। કલ્યાણી જીદુનાથે કંઈક ધ્રુજતા સ્વરે બૂમ પાડી, આવી દાદાજી. અંદરથી કલ્યાણીએ ઉત્તર આપ્યો અને ઝટપટ એનું કામ છોડીને બહાર આવી. જીદુનાથના હાથમાંથી વસ્તુઓ લઈ લેતા દુઃખી થઈને તે બોલી કે તબિયત જરા સારી નથી દાદાજી, શા માટે આટલી બધી મહેનત કરો છો? દર્દને દબાવી જીદુનાથ ફિક્કું હસ્યો. કોમળ કંઠે તેણે કહ્યું કે મહેનત તો કરવી જ પડે ને બેટી. લગ્નનો દિવસ હવે દૂર નથી, કામ ન કરું તો કેમ ચાલે? કહેજો. કલ્યાણીનું મોં પડી ગયું. કશું જ બોલ્યા વગર બધી જ વસ્તુઓ લઈને ચૂપચાપ એ અંદર ચાલી ગઈ. એને જતી જોઈને જીદુનાથે એક નિશ્વાસ મૂક્યો અને પછી ધીરે ધીરે એ અંદર આવીને બેઠા. જીવનની પાનખર હવે આવી પહોંચી છે. સૂકા થઈ ગયેલા આ ખખડધજ વૃક્ષને ઢળી પડવાને હવે વાર નથી રહી. એવે ટાણે જ જાણે અચાનક પાણી સિંચી સિંચીને એમને કોઈ નવજીવન આપવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યો છે. પાણી ઓછું પડે ત્યારે આંસુ સારીને મૂળિયાને જીવતા રાખવાના અથાગ પ્રયાસો આદરી રહ્યું છે. જીદુનાથનું મન ખીન થઈ ગયું. 16 વર્ષ પહેલાંની વાત તેમને નજર સમક્ષ તરવરવા લાગી. એક દિવસ વહેલી સવારે નદી કિનારે ફરવા જતા મળેલા એક તરતના જન્મેલા બાળકને કેવલ અનુકંપાથી પ્રેરાઈને એ ઘેર લાવ્યા હતા. પોતે તો જીવનમાં 50 વર્ષ સુધી એકલરામની બેફિકર મસ્ત જિંદગી ગાળી હતી, પણ તેમના પર જે મમતા રાખતા હતા એ તમામ પર શ્રદ્ધા રાખીને એ પેલી બાળકીને પોતાની સાથે લઈ આવ્યા હતા. પેલા નંદુબેન, રેવાબહેન, કાશીમા સહુ કેટલા ભલા હતા, પણ એમાંથી કોઈએ એ બાળકને રાખવાની ને પાળવાની હા પાડી નહોતી. હા, ઘસીને સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી હતી. ઉપરથી એક બે કડવા વચનો પણ સંભળાવ્યા હતા, જાણે બાળકના જીવનના મૂલ્ય મા બાપની કાયદેસરતા પર જ અવલંબેલા હતા. જીવનનો જીવન તરીકે ત્યાં કોઈ સ્વીકાર નહોતો. જીદુનાથે બધું યાદ આવવા લાગ્યું. યાની કે જીદુનાથને બધું જ યાદ આવવા લાગ્યું. બધેથી જાકારો મેળવીને નિરાશયે અસૂજ મને એ ઘરે પાછા ફર્યા હતા. પોતાના પરિચિતોમાં પોતે જે શ્રદ્ધા આરોપી એ કેવળ અજ્ઞાનનું જ બીજું સ્વરૂપ હતું એવું સ્પષ્ટ સમજીને નંદવાઈ ગયેલી આશાએ એ પાછા ફર્યા હતા. ત્યારે બપોર પડી ગઈ હતી. આ જ ખાટલા પર બાળકીને સુવાડી એની સામે અનિમેષ સ્નેહને તાકીને એ ક્યાંય સુધી ઊભા રહ્યા હતા. જ્યારે છોકરી રડી ત્યારે ચમકીને એ ભાનમાં આવ્યા હતા અને દૂધ લેવા જલ્દી નીચે ઉતરી પડ્યા હતા. અહીંયા અનિમેષ યાની એટલે કે વગર પલક ઝપકાવીને કહે છે કે એક ધાર્યા ताकी रहूं. यानी जीदूनाथ जो है वो बाहर जाकर जब घर पर वापस आते हैं तो अपनी बेटी कल्याणी को आवाज़ देते हैं कि कल्याणी, और उस अंदर से कल्याणी आवाज़ देती है कि मैं अभी आती हूँ, और इस प्रकार वो फटाफट अपना काम छोड़कर बाहर आ जाती है और जीदूनाथ के हाथ से सारी चीज़ें लेकर दुखी होकर कहती है कि आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है दादाजी, आप इतनी उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। यानी दर्द को दबाकर जीदूनाथ थोड़ा सा हंसे और कोमल कंठ से उन्होंने कहा कि मेहनत तो करनी ही पड़े ना बेटी, क्योंकि अब तेरी शादी के दिन दूर नहीं है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये कैसे चलेगा, कहो तो। और ये सुनकर जो कल्याणी है उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया और कुछ भी बिना बोले वो सारी चीज़ें लेकर अंदर चुपचाप से चली गई।
उसे जाती हुई देखकर जिदुनाथ ने एक यानी कि निश्वास रखा। कहते कि उदास हताश होकर फिर अंदर धीरे से आकर बैठे। कहते कि जीवन की ये जो पतझड़ है वो उनके नज़दीक आ पहुंची थी। इस सूख गए हुए कहते हैं कि पेड़ की जो डालियां हैं उसे इस पेड़ को यानी कि अब गिरने की अब देर नहीं है। और ऐसे समय में कहते हैं कि अपने आंसुओं के पानी से सींचकर उसे नया जीवन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि ये सारी चीज़ें देखकर जिदुनाथ का जो मन है वो उदास हो जाता है, वो एकदम हताश हो जाते हैं। 16 साल पहले की जो कहानी है, जो घटना है, वो उनके सामने आने लगती है। कहते हैं कि एक दिन वे यानी कि जल्दी सुबह को, यानी जब सूरज निकला भी नहीं था, और उस समय सुबह सुबह जब वो नदी किनारे के पर घूमने के लिए जब जाते हैं तो उस समय उन्हें ये जो बच्चा है, ये जो कल्याणी है, वो वहाँ पर मिल गई थी। कहते कोई उसे छोड़कर चला गया था। वो उसे कहते कि दया से प्रेरित होकर घर ले आए थे। कहते कि खुद तो 50 साल अकेले जीवन जी लिया था, लेकिन कहते हैं कि उन पर जो जो लोग ममता रखने वाले थे, जो लोग उन पर श्रद्धा रखते थे, उन सबको उन्होंने इस बच्ची को गोद लेने के लिए कहा, लेकिन सब ने इनकार कर दिया और ऊपर से उन्हें भला बुरा भी कहा। लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ये जो सारे रिश्ते हैं वो जो कि उनको वहाँ पर एकदम व्यर्थ, एक मामूली लगने लगे। और इस प्रकार जिदुनाथ ने उस बच्ची को कहते कि पालने का निश्चय कर लिया। जिदुनाथ को सब याद आने लगा। कहते हैं कि जब हर जगह से उन्हें इनकार मिला, यानी सबने मना कर दिया, तो दुखी हृदय से यानी दुखी होकर कहते हैं कि वो अपने घर वापस आते हैं। और कहते हैं कि दूसरी तरफ जब वो खाट पर यानी कि चारपाई पर जब उस बच्ची को देखते हैं तो कहते हैं कि कई समय तक यानी बड़ी देर तक वो उस बच्ची के सामने ऐसे देखते ही रहते हैं। जब वो बच्ची रोती है तब जाकर उन्हें हकीकत पता चलती है, वो भान में आते हैं और फटाफट दूध लेने के लिए जल्दी से जो ऊपर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। દિવસો ને રાત્રિઓ ત્યાર પછી વીતતા ચાલ્યા છે। બીજમાંથી અંકુર, અંકુરમાંથી છોડ ને વધતા વધતા આજે કલ્યાણી એક સોહામણી ફૂલવેલ બની ગઈ છે। આ બુઢા આદમીના પ્રાણને તેણે સ્નેહને ઝૂલે ઝૂલાવ્યો છે। જીણ એવા દેહ પર મમતાનો હાથ ફેરવ્યો છે। ઝીણી ઝીણી એની કાળજીને લઈને તેમને અવશ બનાવી મૂક્યા છે। કલ્યાણી કોઈ પરાઈ કન્યા છે, કુળ કે ઘરબાર વગરની માતા પિતાથી ત્યજાયેલી કન્યા છે, એ વાત સમય લઈને સ્મૃતિ સરખી થઈ ગઈ છે। આજ કલ્યાણીના દેહ પર પણ વસંત ફૂલની મહેક પ્રગટી ઉઠી છે, પણ તેના જીવનની તમામ કેડીઓ જાણે જુદે જુદે માર્ગે જઈને આખરે દાદાના અસીમ સ્નેહ સાગરને જ વિલીન થાય છે। એને ખબર નથી કે પોતે કોણ છે, પોતાના માતા પિતા કોણ છે। જન્મના પ્રારંભે પોતાને કારણે જીદુનાથને પરિચિતો તરફથી કંઈક સહન કરવું પડ્યું છે અને એને જ કારણે એ લગભગ એકલા જેવા રહે છે એ વાતની એને ખબર નથી। બહારના લોકો સાથે જીદુનાથ બહુ હળતા મળતા નથી, એટલે કદાચ દુનિયાના વિશાળ પટ પર કલ્યાણી માત્ર એક જ વ્યક્તિને ઓળખે છે। દાદાજી એના માથા પરનું આસમાન છે, પગ નીચેની સુગંધિત ધરતી છે, તેની આંખો સામેનો પ્યારો સમુદ્ર છે, એના દેહને સ્પર્શીને ચાલી જતી મધુર હવા છે। દાદાજી એના જીવનનો આધાર છે, એનું સર્વસ્વ છે। જીદુનાથના મનમાંય હવે રહી રહીને સ્નેહના પૂર પ્રગટી ઉઠ્યા છે। કલ્યાણીને એ આવા કોઈ ખ્યાલ વગર જ ઉછેરતા આવ્યા હતા। પોતાને નહીં આવડે એવા ડરથી ઉલટું તેમણે વધુને વધુ કાળજીપૂર્વક તેનું જતન કર્યું હતું। પણ
અજાણપણે એ જેને પાળતા પૂછતા આવ્યા હતા એનામાં એ પોતાની જાતને જ પરોવી રહ્યા હતા એ વાતની એમને છેક હવે ખબર પડી છે. સાનિધ્યમાં જેનું સ્વરૂપ નહોતું સમજાયું એને આજ વિદાયની વેદના જ્વાળાના અજવાળામાં એ સ્પષ્ટપણે સમજી રહ્યા છે. यानी दिन पर दिन बीतते गए और कहते हैं कि कल्याणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और कहते हैं कि इस बूढ़े आदमी की जान को, उसके प्राण को अपने स्नेह के झूले से उसने झुलाया है और इस जीर्ण ऐसे देह पर ममता का उसने हाथ फेरा है और कहते कि सबसे छोटी से छोटी उनकी जो देखभाल उनकी करके उन्होंने एकदम उसे अवश्य बना दिया है. कहते कि इस प्रकार कल्याणी जो है अपने दादाजी की बहुत ही यानी कि देखभाल वो करने लगी. कल्याणी कोई पराई कन्या है, कुल या घर बार बिना की माता पिता के द्वारा त्यजी हुई बच्ची है. इस बात को कहते कि सब लोग भूल गए थे, किसी को याद भी नहीं था. आज कल्याणी के देह पर जब वसंत फूल की जो महक जब यानी प्रकट हो उठी है, लेकिन कहते कि उसकी जीवन की तमाम जो उसके जीवन के तमाम रास्ते जो है वो अलग अलग होकर अंत में अपने दादाजी के असीम स्नेह सागर के अंदर ही मिल जाते हैं और उसे पता भी नहीं है कि वो कौन है, उसके माता पिता का कौन यानी उसके माता पिता कौन है. जन्म के प्रारंभ में कहते कि खुद को यानी खुद के कारण जिदुनाथ को अपने रिश्तेदारों से, अपने परिचितों से क्या क्या सहन करना पड़ा. कहते हैं कि और इसीलिए आज वो अकेले रह रहे इस बात की भी उसे बिल्कुल पता नहीं है, यानी खबर भी नहीं है उसे इस बात की. कहते कि बाहर के लोगों के साथ जिदुनाथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, इसीलिए कदाच यानी कि दुनिया के इस विशाल पट पे कल्याणी ही एकमात्र व्यक्ति को पहचानती है और वो है उसके दादाजी. उसके दादाजी ही उसके सर पर यानी सर पर छाया है, आसमान है, नीचे की उसके पैरों के नीचे सुगंधित यानी धरती है और वही कहते हैं कि उसकी आंखों के सामने जो प्यारा समुंदर है, यानी सब कुछ उसके दादाजी है. उसके लिए सर्वस्व अपने दादाजी ही माने जाते हैं. कहते हैं कि जिदुनाथ के मन में भी अब रह रहकर स्नेह और ममता प्रकट हो रही है. कहते हैं कि कल्याणी को उन्होंने बिल्कुल किसी भी ख्याल बगैर कहते हैं कि उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया. कहते हैं कि शुरुआत में उन्हें ये डर था कि उन्हें कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी देखभाल की और इस प्रकार उसे पाल पोस कर आज बड़ा किया. कहते हैं कि उन्होंने यानी कल्याणी के अंदर उन्होंने अपनी आत्मा तक उन्होंने डाल दी, यानी वो कल्याणी को बहुत ही स्नेह करने लगे. और जब आज कल्याणी की जो विदाई की जो समय जो आ रहा है, उस विदाई की समय को कहते हैं कि वो समय उन्हें अग्नि की ज्वाला की तरह हृदय में जला रही है. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.